Hello friends, today we are going to have a discussion on Mahindra and Mahindra Financial. A company belongs to Mahindra Group. A Mahindra Group renowned promoter of India, Mr. Anand Mahindra. आनंद महिंद्रा या महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे टेक महिंद्रा जो आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व है। देन इनकी सेकंड कंपनी आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है। इन्हीं मैन्युफैक्चर व्हीकल को सिनर्जी अपने बिजनेस को सिनर्जी देने के लिए इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स बिजनेस कंपनी बनाया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के। अगर हम कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो कंपनी का बैकग्राउंड मींस इनकी होल्डिंग कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एंड इनका की बिजनेस है फाइनेंस प्रोवाइड करना, चाहे नया व्हीकल हो चाहे पुराना व्हीकल हो, ऑटो एंड यूटिलिटीज व्हीकल के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, कार के लिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड एसएमई फाइनेंस, अलग अलग तरह के फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एंड इनके 1384 ऑफिसेज है ऑल ओवर इंडिया में और 27 स्टेट में इनकी प्रेजेंस है और 7 यूनियन टेरिटरी में भी इनकी प्रेजेंस है। अभी तक इन्होंने 7.9 मिलियन कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। एंड क्रेडिट रेटिंग, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए स्टेबल जो बहुत अच्छी मानी जाती है। ट्रिपल ए स्टेबल अभी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग है। एंड अगर हम बात करते हैं उनके बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो कंपनी व्हीकल फाइनेंस प्रोवाइड करती है। प्री ओन व्हीकल, जैसे आपके पास ऑलरेडी कोई व्हीकल है उसको फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एसएमई फाइनेंस प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करती है। अगर ऊपर अपन तीन फाइनेंस की बात करते हैं ऊपर की, तो तीनों के तीनों फाइनेंस सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड कैसे है कि एक व्हीकल को फाइनेंस करते हैं तो व्हीकल को मोर्गेज रखना पड़ता है, उसके बाद ही फाइनेंस होता है। तो दीज ऑल थ्री फाइनेंसेस आर सिक्योर्ड फॉर द कंपनी। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है बट वहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट होती है। एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इन्होंने एक सब्सिडी बना रखी है जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है, ये इनको सिनर्जी देता है। जैसे जब भी कोई व्हीकल महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना खुद का व्हीकल बेचती है तो वो अगर उसको फाइनेंस कराने की रिक्वायरमेंट है तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल उसको फाइनेंस कर देती है और इंश्योरेंस ब्रोकिंग उसका इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर देती है। तो इनको पूरा सिनर्जी मिलता है। हाउसिंग फाइनेंस, अगेन हाउसिंग फाइनेंस इज अ सिक्योर्ड फाइनेंस। म्यूचुअल फंड एंड एएमसी बिजनेस, कंपनी ने अभी म्यूचुअल फंड एंड एएमसी बिजनेस भी चालू किया है। अगर अपन उनकी ब्रांचेस की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया इनकी प्रेजेंस है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है। We have already discussed that इनके 1384 ऑफिसेज है ऑल ओवर इंडिया। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52.16% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 13.59 नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास है, 16.14 म्यूचुअल फंड एंड डीआईएस के पास है, 17.9% एफआईआई के पास है एंड 0.21% अदर इक्विटी के पास है। अगर अपन लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जो मार्च 2022 में शेयर होल्डिंग पैटर्न आया तो उसमें एक नया नाम आया, आशीष धवन, जो रिनॉन्ड इन्वेस्टर है जिन्होंने मोर देन 1% इक्विटी एक्वायर की है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में, विच इज वेरी गुड साइन। एंड दिस इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। This is shareholding pattern on screener. If you see shareholding, there is an increase of around 1% in between June 2020 and September 2020. इसी बीच में कंपनी ने राइट इशू लाया था तो कंपनी के प्रमोटर्स ने राइट इशू को थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब किया पब्लिक से, इस कारण से इनकी होल्डिंग में इंक्रीज आया है प्रमोटर की होल्डिंग में। These are the DIIs which are holding, like LIC is holding 5.7%, Ashish Dhawan is holding 1.18%, which he has added in the last quarter only, which is very good sign. And SDFC has increased their stake, and then this particular 2.18% ICICI Prudential has increased stake, SBI Mutual Fund has increased stake. So this is good sign that FII are intact or they are acquiring the stake in the company. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की होल्डिंग कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की सब्सिडीज कंपनी है महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा फाइनेंस यूएसए एलएलसी लिमिटेड, महिंद्रा मेन्यू लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 51% इसमें होल्डिंग है। महिंद्रा मेन्यू लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, आइडियल फाइनेंस लिमिटेड, दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन श्रीलंका। These are the 80% महिंद्रा एंड महिंद्रा इंश्योरेंस में होल्ड करता है, तो बाकी की पार्ट एक्सेल ग्रुप ने होल्ड कर रखा है। लोन बुक, कंपनी की नेट लोन बुक आफ्टर प्रोविजन, नेट ऑफ प्रोविजन, if you see last 4 years there is a consistency in the loan book. In 2000 financial year 2019 the loan book was standing at 61250, then there is a little bit increase in loan book
then to 64993 crores. Then again there is a reduction in loan books. Then again stable. The loan book since last 4 years is very stable for the company. This is because of the COVID situations. Then there was an ILFS crisis of in non-banking finance corporations. So the company has tried to maintain their balance sheet since last 4 or 5 years, and this particular loan book is making a new base for a growth for the company. Means we expect that the loan book to grow in the futures. Breakdown, this loan book has a breakdown then how much that auto, utilities and vehicle has a 32% loan book. Means they out of 60,000 crore loan book, 32% are secured to auto, utility vehicles. Tractors has 16% finance, cars has 22% finance, commercial vehicle and construction has 12% finance, pre-owned vehicle has 11% finance. So you can see that all the finance, the maximum finance is of vehicle. SME and others has 7% finance, and contribution of Mahindra and Mahindra assets in AUM is 46%, which is consistent or which is growing. Means Mahindra and Mahindra Limited जब कोई vehicle बेचती है तो उसका finance Mahindra and Mahindra Financials के through होता है. Risk management policy. Risk management policy पहले हम आपको बता दे तो होता क्या है. See, every loan has there means there may be a default by the loan. There may be a default in loan. Means the borrower may default in making a payment, timely payment of their installment. So if the due date, if the borrower does not make a payment of their loan installment within a 30 days from the due date, then that is known as stage 1. Means they all are standard account, standard loan. Stage 2 means there is a little pressure. The borrower has not made the payment of their installment since last 30 days to 90 days. In stage 3 is critical. More than 90 days they have not made the payment of their installment. So these are the different bifurcation for making a provisions. So to making a provision. So abhi stage wise, see, there was we have initially discussed that there are 60,445 crore loan of the company, and this bifurcation is of 64,961, and the company out of 64,961, the company has already created a provision of 65,4508. So stage 1 में जो कंपनी के लोन है वो 50,727 करोड़ से, which constitute 78% of their all loan book. और उसमें वैसे प्रोविजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. क्रेडिट रिस्क के हिसाब से प्रोविजन किया जाता है कि कितने और फॉल हो सकते हैं. तो 0.9% कंपनी ने एज अ सिक्योरिटी प्रोविजन किया है. 14.25% जो कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें से कंपनी ने 1174 करोड़ का प्रोविजन पहले से ही कर चुकी है, जो 12.7% ऑफ ओवरऑल लोन अमाउंट कंसिस्ट करता है. और स्टेज 3 में कंपनी के 4976 करोड़ लोन है, 7.66% कंस्टिट्यूट करते हैं ओवरऑल लोन बुक का, जिसमें से ऑलमोस्ट कंपनी ने 58.1%, ऑलमोस्ट 60% कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है. 40% अभी भी प्रोवाइड करना बाकी है. अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के क्वार्टर से, सो लोन बुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, वहीं पर है, उसी जगह पर है. नया न तो एडिशन हुआ है न डिलीशन, ऑलमोस्ट सेम है. न एडिशन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं हुआ. अ गुड थिंग इज स्टेज 2 में जो 9257 करोड़ का लोन है, उसमें से कंपनी ने रिस्ट्रक्चर कर दिया 3626 का, और उसमें से 1470% हैज नील ओवरड्यू. उनमें से 1470 करोड़ हैज नील ओवरड्यू. दिस इज वेरी गुड साइन दैट अगर मीन्स जो कंपनी के रिस्ट्रक्चर्ड लोन है वो ऑलमोस्ट 1/3 और 40% है, और उस 40% में से 1470 करोड़ ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया. तो आने वाले टाइम में वो स्टेज 1 में आने के चांसेस है. एंड स्टेज 3 में रिस्ट्रक्चर्ड लोन अमाउंट 393 करोड़ है. मैक्सिमम प्रोविजन कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है. इस कंपनी की एक और अच्छी बात है कि कंपनी का जो भी फाइनेंस है वो ऑलरेडी व्हीकल के थ्रू कवर्ड है. तो कंपनी के पास रिस्क डिफॉल्ट की बहुत कम है. एनालिसिस, सो बिजनेस एसेट्स का अगर अपन एनालिसिस करते हैं तो 64,961, उसमें से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल द थिंग्स. सो 58.1% स्टेज 3 का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड अगर अपन बात करें कंपनी को कितने कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्टेज 3 है, कंपनी के आउट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट जितने भी उनके लोन है तो कितने हैं, 1,19,202 कंपनी के ऐसे कस्टमर हैं जो स्टेज 3 में है, और उनकी रीपोजेस एसेट्स की वैल्यू 9,059 करोड़ है. So you can understand this, out of 4976 crores stage, 9,059 करोड़ repossessed assets है. Assets की वैल्यू 9,059 करोड़ है. So कंपनी ऑलरेडी सिक्योर्ड है उस पर्टिकुलर assets के अगेंस्ट में. स्प्लिट एनालिसिस,
that is very very important for any financing company. How much margin they earn. See, finance company take a loan from others and give a loan to others. So maximum loan they have taken a loan along with their equity. Both the cost of capital to them is 5.2%. However, when they finance to the borrower, they get a 13.8% of interest rate. So 13.8% interest rate and 5.2%. So the gross speed is 7.6, and they're maintaining it throughout last 3 years. 7.7, 7.7, 7.6. So we can see that borrowing cost जैसा जैसा उनका उन्होंने जो लोन दिया है, कंपनी ने जो लोन दिया है, उसमें अगर किसी प्रकार का प्रेशर आता है तो वो प्रेशर पास ऑन करने में कंपनी सक्सेसफुल हो रही है जिनसे वो लोन लेती है. सो दे आर मेंटेनिंग देयर ग्रॉस स्प्रेड. Overhead company are maintaining 2.9%, 2.2%, 2.7%. Write off 2.9%, then again 4.9%, then 3.1%. This is a big hit on the profit of the company from 2.9%, 3%. So overall loan book almost 3% means 1800 crore. If we talk about 60,000 crore, then it is 1,800, 1,000, 2,000 crore. Or they write off. This is a very big hit. In the upcoming time, that we may see reduction in this particular write off, and we may see increase in the loan book. With this, we can expect that there can be a good increase in the profitability of the company. And if we talk about the loan, from where the company has taken the loan to finance to their customer. So they have taken a loan from banks, mutual fund, insurance and pension fund, FIIs and others. So almost the bank has given a finance of 48.4%. Mutual fund has invested in company 9.1%. Insurance and pension fund has invested in the company 18.2%. FII has invested in the company 9.9%, and others 14.4%. Funding company has an NCD, retail NCD also means retail investor has directly invested in the company. NCD means the corporate investor has invested in the company. Bank loans, offshore borrowing, fixed deposit, CP, ICD very less portions. Long-term, short-term finance, the company has very less portion, and securitization and assignment. If we talk about the balance sheet, we have discussed a major portion of the balance sheet. Means in a finance company, they provide a loan and they take a loan. Both the major point we have already covered on in the slide already gone. So this the major focus, if we can see, are like the company has a very good bank balance 3823 crores, and the company has made an investment of 8,440 crore, which is if we compare from March 2020, it is 21, it is reduced, and this particular is now lying at a bank. The difference is lying at the bank. And liability, we have already discussed this particular liability portions, and liability we have already discussed. There is no major liability of the company other than this particular loan taken from the financial institution and bank. Revenue, there is no major growth in the revenue, as we have already discussed this. Due to COVID situations and IL&FS crisis, there was a very big pressure on the non-banking finance companies. The pressure can be seen on the balance sheet, profit and loss account and balance sheet of the company. There is no growth since last 3 or 4 years. The best part is they are sustaining their spread and they are sustaining their loan book. Both they are sustaining, they are able to sustain it. Let us discuss about some key ratios. Return on net worth. Due to COVID situation, there was a sharp decline on return on net worth, but we can see in March 2020 there is an increase in return on net worth from 2.5% to 6.5%. There is sharp reduction in debt equity ratio. It was 5.23 times in March 2020. Now it is standing at 3.57. It's very sharp reduction. We can see almost 40% reduction in debt equity ratio. Capital, this may be measured due to the right issue company has issued in between March 2020 to March 2021. Tier 1, there is a sharp increase in capital adequacy ratio. It was standing at the time of COVID situation 19.6%. They have increased to 27.8%. It gives a comfort level to the company. EPS 10.9 to 8.02. Book value 184 to 126. Dividend, company has restarted making a good amount of dividend to the investor. New contract 6,47,000 customers they have approached. New number of employees, company almost have 20,000 employees.
Standing the company. Consolidated balances, we will not take a big time on it. It is this balance sheet include the loan, other four five subsidiaries which we have covered, which we have discussed at the time of holding structure of the company. This is consolidated balance sheet of the company, consolidated profit and loss account. We will not take a time on this. And then revenue. This revenue, if you see from June 2019, this is quarterly result of the company. June 2019 to March 2020, there is no sharp increase or decrease in the revenue side of the company. If we see about interest cost, however, the interest cost was 1263 crores, 3 crores. It is reduced to 1053 crore, which is good sign. The company is able to increase their spread. So financing margin 6%, 31%. This is financing margin. This is net of provisions. Other income, company has a little other income like insurance income and depreciation. This is a finance company, depreciation. There we will not see a big amount of depreciation. Net profit last 3 quarters, it is consistently giving a positive EPS, which is a good sign. Profit and loss account, March 2011 to March 2018-19, there was almost 20% increase on every financial year, and since this IL&FS crisis, this particular financial income is sustaining since last 4 years. I should say that the company is making a new base for a new growth. This is my personal view. Company is making a new base for new growth. So Mahindra, this is a subsidiary of company Mahindra Rural Housing Finance. Not an impressive performance, and almost rows 3 11.33% are standing in rows 3, and the loan and advances are 7,029 crore. Loan disbursed is 651 crore. So not an impressive performance. This is good. Mahindra and Mahindra Insurance Broking Limited, Insurance Broker Limited, 5,80,701 policies they have already issued till the, and 826 premium they have collected. Total income earned by this premium collection is 114 crores. Profit after tax is 21 crore. They have around 1,027 almost 1,000 employees. हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, आपको कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बताए गए थे जो कंपनी काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में, कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में, कंपनी का प्राइस और टेक्निकल क्या कहता है। अब ये चार्ट जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल का है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर हम देखें तो कंपनी का जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो जनरली अगर आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो डाउन ट्रेंड में ही है पहले से, तो हम इसको क्यों लें। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। एज यूजुअल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हेन a major trend is going to be reversed, then there is a build up near the resistance trend line, which is, you can see here, there is a build up. It's not going down, it's not going up, but it's consolidating here. That is a sign of build up to break this trend line and go up. And as you can see, is the major support nearly here. And if we see the price above 191 and 192, then we can see a shift up move, and within a year or 2 years, as we expect that the market will go around 240, then second target will be our 294 or 300, and the last and final target will be 320. So above 192 it's good to take it, and we are not advising this too because we are not SEBI registered, and this is for just for education purpose. जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं, और कीप ट्रेडिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।